Hello, super champs from super grads. I am your English mentor, Sana Jafri, and I think you already know me by now. So, today I'm here with a much requested video. As your IPMAT exams are around the corner, and there is so much of chaos in the little minds of students as to in 4 months what best can be done. The problem is exacerbating because in this 4 month span, you don't just have to prepare for IPMAT, but you also have to prepare for your board examinations. यहाँ पे droppers को clear advantage है. तो droppers अभी भी थोड़े chill mode में चल रहे हैं. And droppers के लिए particularly piece of advice मैं दूंगी at the end of the session, right? But for people who are in 12th, are really in a quagmire. They are in a big time dilemma as to how can they prepare themselves for 12th board examinations, which is of course a very demanding paper and should definitely deserves all your attention, energy and effort. But at the same time, IPMAT exam, which is very difficult to crack, मतलब competition बहुत है और ऐसे में आपको जगल करना होगा इन दोनों एग्जाम्स के साथ में, तो आप कैसे करेंगे? स्टूडेंट्स हैव बीन आस्किंग अस अबाउट अ क्लियर रोड मैप और क्लियर ब्लूप्रिंट कि कैसे ये काम करना है. सो मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलूंगी एट दिस जंक्चर. इफ आई गिव यू a timetable or even a task table, that's not going to be a very viable thing to do. Reason being that on and off, जब जब आपको टाइम मिलेगा, you'll have to steal time from your preparation. Fine. एंड अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं कि इसको इस दिन तुम्हें ये करना है, उस दिन ये करना है, तो वो एक सही प्लान नहीं होगा because it's not a very customized plan and one size fits all strategy does not work, right? So I am giving you a crystal clear idea regarding what are the important topics and how much time should you give to each and every topic. And there are some general guidelines which will help you prepare yourself with the right attitude. Fine. And बहुत ही डिटेल में ब्रेकअप अभी मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ, which is going to be very beneficial for all of you who are writing your board exams also and simultaneously IPMAT. साथ में जैसे मैंने आपसे बोला, ड्रॉपर्स निराश ना हो, आपके लिए भी बहुत यूजफुल है ये और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए भी होने वाली हैं, राइट? सो लेट्स बिगिन. We start with this very basic understanding. देखो भाई, क्या है ना कि आप टारगेट तो बनाते हो, बट टारगेट जो है ना आपके, वो स्मार्ट होने चाहिए. आपके जो गोल्स हैं वो स्मार्ट होने चाहिए. नॉर्मली यही होता है कि वी नो दैट वी हैव टू डू फाइन वीए आई हैव टू स्कोर 115 वीए. मैंने तो डिसाइड तो कर लिया that this is my target, yeah, I just want to clear the cutoff of VA, but how am I going to do that we don't know. We are totally lost. और फिर कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है, और गोल्स भी जो बना लिए, दे आर सो आउटलैंडिश एंड ऑलमोस्ट impossible to achieve. As we say, a pie in the sky kind of goals, that is not going to take you anywhere. इसीलिए always frame smart goals, specific goals. What am I going to cover in this particular week? For all the three sections, don't you neglect reasoning because reasoning आपको सारे एग्जाम्स में आएगा except IPMAT Indore. So if you're focusing only on Indore, then it's a different thing, but otherwise you must definitely prepare yourself on reasoning as well, right? So हर subject wise आपको decide करना होता है. Weekly आपने एक target बना लिया कि ये सारे topics मुझे इस हफ्ते cover करना है. Fine. तो specific होना चाहिए, तभी आपको पता होगा कि क्या पढ़ना है, राइट? कैसे पढ़ना है. मेजरेबल होना चाहिए so that there is higher accountability. I should be able to measure. When you will take tests, you will take mocks, you will realize that, okay, fine, I studied, but then what is the progress? I should be able to measure. What have I learned? How have I progressed? Am I really progressing or not, right? Attainable. I want to become Norman Lewis. It's not an attainable goal. Or I want to be as good as Ren and Martin. No, your goals have to be attainable. अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं मतलब थोड़ा सा पढ़ के एकदम बहुत ही बड़ा विद्वान बन जाऊंगा, नहीं होता है. It takes time. Especially in VA. In English, you'll have to be very patient. Your scores will never skyrocket. Inch by inch, you will become closer to your target. Relevant होना बहुत जरूरी है. अब यहाँ पे I would like to tell you, you get whatever material you want and you start preparing.
Did you even check whether this material is relevant for your exam or not? Is this the right material or not? I copy someone else, right? Did I check whether this strategy is relevant to me and my needs or not? So you'll have to be very, very particular regarding the resources, regarding the targets, and your methodology. Don't blindly copy others. You know best what you lack in. You know best what you are good at, right? Accordingly, set your targets. And finally, yeah, time based. This is really important. You should know कि भाई मेरे पास में कितना टाइम है, राइट? आपने लूजली किसी से बात करी और आपने डिसाइड कर लिया कि यार मुझको तो मतलब इंग्लिश में रोज मुझे 5 पैसेज करने हैं, रोज मुझको 100 वर्ड्स याद करने हैं, दैट्स द वे. बट देन यू हैव टू नो हाउ मेनी आवर्स डू यू हैव प्रिसाइसली विद यू, राइट? सो दिस इज वेयर आई हैव कम अप विद दिस थिंग. एंड यस, अभी पिछला ही एक वीडियो आया है अनिल सर का, जिन्होंने क्यूए पे बहुत ही प्यारे तरीके से डिटेल में ये पूरी मैथ करके हमको सिखाई है, ठीक है? तो ये वही से मैंने उनका लिया है, ताकि ऑन द सेम लाइंस में भी आपको मेंटरिंग कर पाऊं. और इंग्लिश में ही हैज डन इट फॉर क्यूए वंडरफुली वेल फॉर क्यूए, सो आई विल डू द सेम थिंग फॉर वीए और योर वर्बल एबिलिटी सेक्शन. तो अगर आपने नहीं देखा है, आप देखिए वो वीडियो, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से आए पूरा. मैं डिटेल में वो दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती हूँ. बट देन considering that you have 40 days from April to May, right, for IPMAT Indore, तो we have total of 400 hours, right? फिर Jan, Feb, March में भी कुछ कुछ दिन आपके पास में है. Even during the board exams बीच बीच में कुछ दिन होंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा IPMAT का. You cannot be totally disconnected with it. You cannot be only focusing on your board exams because साल भर भी तो तुमने बोर्ड का पढ़ा ही है ना, ठीक है? So these many 60 days approximately इन 3 महीनों से भी आपको मिलते हैं, so that's 180 hours. So total you have 580 hours, approximately 600 hours with you, right? Pure maths. अब इससे हम देखेंगे कि इंग्लिश में हमारे पास में कितने होंगे. तो आउट ऑफ इसमें फिर हमने कुछ मॉक और रिवीजन भी दे दिया है. तो सर ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉर प्लानिंग बताया, तो वहां पे हम कह रहे हैं कि ठीक है, मॉक टेस्ट है, सारे सब्जेक्ट के होते हैं, तो टारगेट है कि कम से कम 12 मॉक्स आपको देने हैं. दैट्स द टारगेट. दैट्स एंड दिस इज गोइंग टू बी अ हेल्दी वन फॉर यू, राइट? कंसीडरिंग द लिमिटेड टाइम फ्रेम दैट यू हैव. हियर ऑनवर्ड्स गोइंग फॉरवर्ड हम आपको बता रहे हैं, अब तक आपने जो पढ़ा वो एक अपनी जगह है. दैट्स गोइंग टू गिव यू द लेवरेज दैट यू मच नीड. बट टुडे ऑनवर्ड्स व्हाट यू कैन डू, राइट, दैट वी आर ट्राइंग टू टेल यू. सो 12 मॉक्स, 5 आवर्स पर मॉक. अब 2 घंटा तो मॉक और 3 घंटा एनालिसिस लग ही जाएगा सारे सब्जेक्ट्स का. Even English में I have this complaint that students don't analyze well. You accept the answers. अच्छा ये गलत हो गया, अच्छा ये सही हो गया, अच्छा इतने मार्क्स आ गए. नहीं, that's not how it is done, right? Please understand that you will have to evaluate. Why is my answer wrong? What is their reasoning? Right? You may have to reread. You learn a new phrasal verb, you record it. You learn a new idiom, you record it, right? You revise things. So इस तरीके से आपको समझना बहुत जरूरी है. एनालिसिस में टाइम लगेगा. ओवरऑल 5 आवर्स पर मॉक, तो 60 आवर्स तो ये हो गए. फिर उससे पहले हम कुछ रिवीजन के लिए भी आपको स्कोप दे रहे हैं. दैट considering that you have studied everything, your syllabus, your topics are already done, because ऐसे बहुत सारे students होते हैं जिन्होंने 1 year की कोचिंग करी हुई है, कुछ ने 2 साल से कोचिंग करी होती है, 11 से ज्वाइन किया होता है. So we have a number of students who have been studying for a year or for 2 years. So for them, we just need revision probably. Fine. And for that we have earmarked 120 hours. So इसमें आपको बस crucial चीजें जो हैं उन पे वर्क करना होगा. फाइन. एंड जैसे मैथ्स है तो उसके फॉर्मूले, या फिर इंग्लिश में आपने वर्ड लिस्ट बनाई है उसको रिवाइज करना है, इडियम्स रिवाइज करना है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स रिवाइज करना है. दिस इज हाउ इट नॉर्मली वर्क्स. एंड फिर बैकवर्ड जा रहे हैं, 400 आवर्स बचते हैं नाउ, एंड इसमें दिस इज फॉर कोर्स कंप्लीशन. सो मेनी टाइम्स इट हैपेंस दैट आपको अपना कोर्स जो होता है ना वो भी दोबारा देखना पड़ेगा. ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक ढंग से सारे टॉपिक्स करे ही नहीं है. सो वो भी आपको करना होगा. सो ऑफ कोर्स क्यूए इज वेरी लेंदी, तो उसके हिसाब से 200 आवर्स, 100 आवर्स टू वीए, 100 आवर्स टू एलआर. मैं
बिलीव करती हूँ पर्सनली, बीइंग एन इंग्लिश टीचर, दैट आप एलआर से 10-20 घंटे उड़ा के इंग्लिश में लगा सकते हैं, बिकॉज इंग्लिश हैज अ हाई वेटेज. बट लेट्स स्टिक टू this much, this breakup. Sir ने भी propose किया, we stick to this. So now comes the major question that VA में what are the things that we have to study? Because I know with students who go to school, who attend school, they miss their coachings. Many of you might be doing self study. So you have no idea about the important topics. You have no idea about which topic has to be given how much time. So that I'm going to tell you a detailed breakup is next. First of all, what are the important VA topics? First and foremost, reading comprehension. See, there are three basic pillars, right? Comprehension, grammar, and vocabulary. Three most important pillars. There's also something called verbal logic, but logic is everywhere. So obviously, when you are solving a passage, logic लगता है उसमें भी, options evaluate करने में. आप पैरा जम्बल्स कर लो, आप पैरा कंप्लीशन कर लो, essentially ये सब वर्बल लॉजिक की कैटेगरी में आते हैं. बट अगर आप देखो लॉजिकली तो कुछ नहीं है. ये भी तो आपको एक पैराग्राफ दे के पढ़ना है, उसका ऑर्डर निकालना है या फिर उसको कंप्लीट करना है. सो दैट्स आल्सो वन एंड द सेम थिंग. सो इफ यू आर गुड विथ कॉम्प्रिहेंशन, you will be amazing at RC. You will breeze through para jumbles, and of course, para completion also would be a walk in the park. Do you understand? Grammar is one thing I feel you all need to invest a lot of energy and effort in grammar. Grammar will yield you results. In IPMAT itself, we had somewhere around close to 12 questions on grammar, right? तो ग्रामर का वेटेज बहुत जबरदस्त है. ग्रामर इज अ वन टाइम थिंग. अगर एंड ग्रामर हर बंदा कर सकता है, इवन इफ यू आर फ्रॉम अ वेरी वीक इंग्लिश बैकग्राउंड, इवन देन यू कैन एक्सेल इन ग्रामर. वन टाइम पढ़ाई है, एक बार की पढ़ाई है. जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बस पढ़ने हैं. इंपॉर्टेंट एरर्स जो होते हैं सारे इंपॉर्टेंट ग्रामर के टॉपिक्स में, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, एंड अलोंग विद दैट रिपोर्टेड स्पीच, वॉइस, राइट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पैरलिज्म, मॉडिफायर, apart from parts of speech, ये भी आपको topics करने, and you're done. Then you just need miscellaneous error spotting या sentence improvement, whatever the format be, the errors remain the same. So इसलिए grammar पे मैंने बहुत focus किया हुआ है, because grammar से आप बहुत ज़्यादा score कर सकते हो, and I feel हर बच्चा ही score कर सकता है, right? Fillers is very important. We get 6 questions in IPMAT Indore, right, based on fillers. Then idioms are very important. हर एग्जाम में आ रहे हैं. Confusable words इंदौर में बहुत आते हैं. अच्छा, फिलर्स भी हर ही पेपर में आते हैं. पैरा कंप्लीशन, पैरा जम्बल्स भी सब में आता है. इंदौर में विदाउट ऑप्शन आता है एंड बाकी एग्जाम्स में विद ऑप्शन आता है, राइट? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स रोहतक, जिपमैट एंड अदर प्राइवेट एग्जाम्स में आएगा. क्लोज टेस्ट एनालिसिस आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट. अगर आपने इतना भी कर लिया तो ये तो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं. इसको सिर्फ आपको कुछ एक दो एक्सरसाइजेस लगानी होगी, दैट वी विल बी एबल टू क्रैक. मतलब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द अप्रोच फॉर एनालॉजीज. आपको पता होना चाहिए कि क्लोज टेस्ट क्या होता है, कैसे करते हैं. जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस. तो सिर्फ कवरेज के लिए इसको लिखा गया है. कुछ भी वोकैबुलरी बेस्ड मिसलेनियस जो भी आपके पास में एक्सरसाइजेस आएंगी, if you are good with vocab and if your comprehension skills are good, you'll be able to crack it easily. So these, the ones inside the box, the ones highlighted in bold letters, they are the most important topics for English section or verbal ability section, as we say. That's it. So you just have to work on these, right? Now let's come to what is their weightage. I mean, in terms of the number of hours. Let's do a proper allocation for each of these, right? So these are the core topics, and we come back to this basic thing that 100 hours were left with us. Now, in this minimal amount of 100 hours, how can we cover these topics? Now, to RC, I have given 12 hours. Now, with RC, there's one piece of advice. Reading comprehension has, in a way, no theory.
It's just that a passage is given to you, you have to read, understand, and solve the questions. But there are strategies, there are approaches. For that, of course, you will have to, in a way, probably get some nice mentor or some guidance if you don't have that already. But then passages is about a matter of practice. So I sincerely suggest that you should be cracking at least two passages every day. Even if you tell me that, madam, we don't have enough time to read, we will not be able to read anything, and I would say, okay, fine. I understand because you don't have time. But if you solve two passages every day, that will be enough. That will do that reading part. Okay? Next is confusables, 10 hours. Well, the point here why I've given 10 hours to confusables is that confusables, idioms, automatically, when you do confusables, you're actually learning vocabulary. When, see, here synonyms, antonyms, and miscellaneous questions I've given 15 hours. That might appear a little less, but होता क्या है कि जब आप words भी याद कर रहे हो, आप actually fillers भी करो ना, fill in the blanks. उससे भी तो आप words सीख रहे हो. Confusables है वो भी तो vocabulary का ही part है. Separately इसलिए दिया because you get 6 questions based on confusables and IPMAT in the or. That means straight 24 marks are going to be in your kitty. So there are lists of confusables we have provided you in our study material. नहीं है तो आपके पास में resources की कमी नहीं है. Online also you will find ample of resources for vocabulary, for confusables, for idioms. So there's no dearth of material. You already know that. Phrasal verbs में मैंने सिर्फ 5 hours दिए हैं, जबकि इस साल 2024 में कुछ questions आए phrasal verbs पे. But I have deliberately given it a less amount of time. Why? Reason is के phrasal verbs अब आप ज्यादा नहीं कर पाओगे. It's going to confuse you a lot. It's not easy to remember them. दिमाग में खिचड़ी पड़ जाएगी. तो अगर आप पहले से करते आ रहे हो तो फिर तो ठीक है. बट अगर आप पहले से उसको नहीं करते आ रहे हो और अभी a fresh start करोगे तो then it's not a very wise idea to invest that limited number of hours in phrasal verbs because it may not be very productive for you. तो frankly बता रही हूँ कि अब इस पे अगर start कर रहे हो तो ज्यादा फायदा नहीं है. Otherwise phrasal verbs important होते हैं but they are really challenging and they are tricky to remember. Okay, grammar. So a lot of your hours go into grammar because grammar में ही सबसे ज्यादा theory है. Vocabulary and grammar को मैंने सबसे ज्यादा आपको number of hours दिए हैं for preparation because they do require time. And trust me, but this is a one time thing. अगर आप अच्छे से कर लोगे क्योंकि हर एक टॉपिक को पढ़ना है उसके वो errors निकालने हैं. Now listen to me very carefully. If you people have been studying already and if you feel कि हाँ हमने ग्रामर किया हुआ है then आप इसको modify कर सकते हो. See, this is just a standard plan, a generic plan. You can customize it. Please customize it as per your needs. If you have been into practice, if you've been studying, you already know what are your weak areas and what are your strong areas. If you're through with grammar, you need not give it that much time, then you just possibly need to brush up, okay, the core errors, and then just try out a couple of miscellaneous exercises. That's all you need to do. And the remaining hours, you will put in those areas where you lag. अगर आपको लग रहा है यार मेरे से ना पैरा कंप्लीशन नहीं बन रहा या मेरे में पैसेज अच्छे से नहीं बन रहे तो यू इन्वेस्ट दैट मच राइट. सो इतना कॉमन सेंस तुम्हें होना चाहिए. दिस इज नॉट अ रिजिड फ्रेमवर्क बट अ रिकमेंडेड प्लान फॉर बिगिनर्स राइट. ओके, आप एडवांस लेवल पे भी हो, आप अपने हिसाब से चीजें करो. फिर आप अगर एडवांस लेवल ऑफ प्रेपरेशन में हो तो फिर आपको टेस्टिंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए. दैट इज समथिंग दैट यू विल अंडरस्टैंड. then probably course completion nahi balki jaise droppers hain, many of our droppers are already through with their concepts, then in that case they will invest most of their time in revision, right, and testing. So I'll talk about droppers later, right? Okay, so para jumbles 10 hours, para completion 8 hours. Para jumbles is slightly tricky. Now there are many students who say that oh para jumbles to hum chhod ke hi jayenge, para jumbles to humko uthane hi nahi. My point here is that agreed, if you feel that parajumbles without options or theta ones that appear in Indore are very tricky, I don't want to take them. Agreed, but then they come in
Rohtak, they come in IPMAT, right? They come in IIM Bangalore. They come in many private exams. So what are you trying to do? Obviously, you must know parajumbles, right? Okay. So ये plan, I hope so far so good चल रहा है. Final some nice things for you. See, you'll have to be amazing with respect to your performance in vocabulary and comprehension skills. You'll have to focus a lot on these, right? So, learn idioms and confusing words. If you've not already prepared them, they're important. 3 to 5 word clusters per day is going to be enough. If some of you are wondering, how do I go about vocabulary? Set your daily targets. Then, okay, fine, 2 RCs every day I'll take up, and every day I'll take 3 to 5 word clusters. So, for those of you who are wondering what are word clusters, कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा वर्ड लेना है और कोई भी वर्ड लिस्ट होगी वो आपको मिल जाएगी रेडीमेड सिनोनिम्स वाली वर्ड लिस्ट. If you feel you can just Google up and add a few more synonyms and you already get a cluster. You just need to learn it and revise it. ये दो चीजें आपकी डेली टास्क हो सकती हैं. जब आपका एग्जाम है तो वो छूटेगा. That's pretty obvious. But on days when you sit down to study, this should be a part of it, right? Diverse reading as in when you can. You don't have time, it's okay, but you can make up through passages, right? तो आपको क्या चीज है रोज करनी है वो भी मैंने आपको बता दी है. दो चीजें आप रोज कर लो, ठीक है? That's going to help you a lot. Finally, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप previous year questions नहीं try करेंगे, you will never know what your paper is like, what is the actual difficulty level, and to be able to understand that and where you are right now, है ना? वो उस सबको समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने पड़ेंगे. आई स्ट्रिक्टली रेकमेंड के इंदौर के एंड जिपमैट के लास्ट 3-4 साल के पेपर्स जरूर लगा लो. एटलीस्ट 3 year, last 3 years. Okay, you need to solve the papers to understand what your paper is exactly going to be like. Mocks are simulation at the end of the day. You must solve the actual papers and yes, tests. Now, as you are done with your course completion, then next comes your testing phase, which is extremely important, right? Because that is where you have that pressure, you are pitted against time, and then it's time to implement all that you have learned. So make sure that as you keep on completing your topics, right? Please start taking topic tests simultaneously. मैंने पैराजम्बल्स किया, अब मैं उसका टॉपिक टेस्ट लगाऊंगी. एटलीस्ट वन टॉपिक टेस्ट तो बनता ही बनता है, राइट? And yes, people who are doing self study, you will have to procure resources, you will have to procure mocks and tests. Otherwise, without that, your preparation is going to be very limited and staggered, right? Okay, sectional tests or full length tests as and when the need be. So I've done grammar, but I feel that yes, I need a lot of practice on grammar. So I take a sectional test, I choose grammar. I've done passages, somehow I'm not satisfied with my performance, I'll take sectional tests on RCs. Or maybe it's like I feel that I'm doing well in quant, but I'm not doing well enough in English, so I'll take up the full length test for English. Mock test to banta hi banta hai. We've already given you the target, right? So keep on taking your mock test. This is very important. Now for droppers. Droppers for you, this is extremely important. You just now have to revise all that you have learned, a quick revision. And along with that, if you have not taken topic test, please take topic test. बल्कि आप तो टॉपिक टेस्ट को अपना एक बेंचमार्क बना लो. जिन टॉपिक्स में आपको अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज द ग्रे एरिया एंड आई नीड टू वर्क हार्डर इन दिस. That's a very good yardstick, okay, to understand what am I supposed to focus on. आपने पढ़ा सब है, आपको आता सब है, बट आपका परफॉर्मेंस ही कुछ कुछ एरियाज में अच्छा नहीं आ रहा, तो उस पे फिर हमको थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है. एंड ओवरऑल अब आपको टेस्टिंग पे ही सबसे ज्यादा फोकस करना है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर मॉक टेस्ट ड्रॉपर्स इज गोइंग टू of course skyrocket. I expect you to take up now at least 2 mocks every week. You can go up to 2 to 3 mocks, right? There are so many students of mine who are already very well prepared and they are saying that madam, on every alternate day we write a mock. But रोज मत दो.
रोज में आप एनालाइज नहीं कर पाओगे, एंड इट्स अ लिटिल टू अर्ली राइट नाउ. फाइन. सो ऑल्टरनेट डेज पे सही रहता है, and on other days, you can read a bit, you can try out any of these tests, and if you feel that you have a compendium of idioms or confusables or whatever, you can actually revise it. You have word lists, you have to revise it, right? Okay. Finally, things that you have to keep in mind. Please brush up your fundamentals. If your fundamentals are not good enough, no matter how many tests you write, if you don't work on your fundamentals, you will keep on repeating your mistakes and your scores will continuously suffer, right? Focus on accuracy first. With practice, you can build up your speed. Yes. Now, here what happens is that we have this thing in our mind that, okay, fine, the cutoff was 113. Prior to that, the cutoff of English was 125. So I have that number, magical number in my mind that, yeah, I must make at least these many attempts. So students scramble to increase their attempts at the cost of the accuracy. Please don't make this mistake. फोकस ऑन योर एक्यूरेसी. इंग्लिश एक ऐसा पेपर होता है, एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, इसमें क्या होता है ना कि हमसे क्वेश्चन छोड़ते नहीं बनता, हमें हर क्वेश्चन डुएबल लगता है, और यहीं पे हम मार्क खा जाते हैं. बहुत नेगेटिव मार्किंग होती है इंग्लिश में, बच्चों की 40% 50% एक्यूरेसी आती है. माय डियर, प्लीज फोकस ऑन योर एक्यूरेसी फर्स्ट. अगर मैं पैसेज लगा रही हूं तो मैं टारगेट होना चाहिए, आई मस्ट अटेन एटलीस्ट 80% एक्यूरेसी. If there are some fillers or there are some nice, vocab based questions, I must know that, okay, fine. This is something, if I know it, I know it. If I don't know it, I don't know it. हाँ, टेक्निक्स है, हैक्स है, वो लगा लेंगे, बट ब्लाइंड एकदम फ्लूक नहीं मारना है हमको. Analyze your tests well. Without analysis, everything will suffer a lot. Why did I go wrong? What was the reasoning that I applied? How did I interpret it incorrectly? I missed those pieces of information in the passage. Identify your weakness and improve them. Capitalize your strength. We all have some strengths and some weaknesses. Please work on them, right? Smartly navigate through the question. हर question करने लायक नहीं होता. Remember this. And finally, English is a game of elimination. Keep on eliminating the choices, right? You should know the techniques, you should know the strategy, you should know the approach. How can you work out the different options? ये तो आपको पता होना चाहिए. अब तक नहीं पता है, प्लीज अपने फंडामेंटल्स पे दोबारा काम करिए. अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है. देयर इज स्टिल टाइम. मेक श्योर दैट यू यूटिलाइज एलिमिनेशन. Comprehension based questions mentally summarize the information. Simplify long complex sentences. These 2 points will make comprehension very easy for you. आप लोग ये समझते नहीं हो, इसको ना जरा सिंप्लीफाई करना सीखो, चीजों को मेंटली समराइज करना सीखो, तो कॉम्प्लेक्स चीजें भी बहुत आसान हो जाती हैं. नो फ्लूक्स, प्लीज तुक्के मत मारना. हाँ, ये जरूर होगा, इंग्लिश में कई बार ऐसा होता है, यू आर स्टक बिटवीन टू ऑप्शंस because the options are very close. Now, if you are too scared of marking anything, your attempts will go down. तो अगर आपको लग रहा है आपने एलिमिनेट कर लिया एक दो चॉइसेस और बस आपको बहुत ज्यादा लग रहा है, 80% मुझे लग रहा है कि यार ए ही होना चाहिए, बट सी इज ऑल्सो बॉदरिंग मी, एंड देन स्टूडेंट्स रिफ्रेन फ्रॉम मार्किंग विद द फियर ऑफ नेगेटिव मार्किंग. डोंट डू दैट. कभी कभी तुम थोड़ा थोड़ा सा स्मार्ट गेस इंग्लिश में लगा सकते हो. इसीलिए कहते हैं इंग्लिश में थोड़े से अटेम्प्ट्स ऑन दी हायर साइड होना चाहिए, क्योंकि आपको खुद भी पता है कि 100% एक्यूरेसी नहीं आती. 80% एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी मानी जाती है. 80 to 90% accuracy, if you are able to achieve and your attempts are very high, you will definitely clear the cutoff, right? So that's all for today. ड्रॉपर्स, आपके लिए बस यही मैसेज है. लास्ट की 2 स्लाइड्स के पॉइंट्स ध्यान में रखें और टेस्टिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करें, रिविजन पे फोकस करें. यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, so you must focus and concentrate all your efforts to for this examination, right? And I'm sure you will rock. That's all for today. Thank you so much. If you need anything specific, if you need any more input on this regarding this, kindly drop a message. We will definitely entertain your request. Thank you. Bye bye. Take care.